Today we will study about the central force motion. Here we study about the reduction of two body central force problem to the equivalent of one body problem. So here the diagram. If two particles are there, m1 and m2, whose position vectors are r1 and r2 with respect to the origin OI. Now this is the center of mass. ये m1 और m2 का center of mass system है. The equivalent vector जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से है, वो है R2 minus R1. So let us consider a system of two particles of masses m1 and m2 whose instantaneous position vectors in an inertial frame with respect to the origin OI are R1 and R2 respectively. जैसा कि हम लोग ऊपर देखे, hence the vector distance of m2 related to m1 with respect to the vector addition of triangle law of vector addition of R is equal to R2 minus R1. The two masses are interacting via a central force for which potential energy of the system is given by VR. Here potential energy is a function of R only, distance R only. So the Lagrangian for the system is given by a new quantity Lagrangian. This is the difference between kinetic energy and potential energy. T is a kinetic energy and V is a potential energy. Kinetic energy, as we know that half mv square. So half mv square is equal to, for first particle it is half m1 r1 dot square. R1 dot is equal to dr by dt. So first particle it is r1 dot, or second particle it is r2 dot. So it is half m2 r2 dot square. Here it is square, यहाँ square होगा minus Vr. This is equation number 2. So there are two particles and every particles have 3 degrees of freedom. So this system of two particles has 6 degree of freedom, and hence 6 independent generalized coordinates are required to describe the state of the system. In state of R1 and R2 coordinate, we can choose 3 component of position vectors, center of mass. So the definition of center of mass of the system, position vector of the center of mass is given by R is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. Now solving equation 1 and 2, this is equation 1 and this is equation 3. So r1 is equal to, अगर दोनों में अगर हम लोग एक टाइम में अगर r1 निकालें या r2 निकालें तो इस तरह से हम r1 और r2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ m1 m2 जो है वो कांस्टेंट है, बाकी टर्म्स जो है वो डिफरेंशिएट होंगे विद रिस्पेक्ट टू t. सो डिफरेंशिएशन का साइन न लिखकर हम लोग यहाँ पे डॉट यूज करेंगे. दिस इज इक्वेशन 5. अब ये r1 डॉट या r2 डॉट का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. यहाँ r1 डॉट स्क्वायर है, यहाँ याद रखिएगा r2 डॉट का स्क्वायर होगा. सो पुट करने के बाद ये आया, दिस इज इक्वेशन. अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें से r डॉट स्क्वायर और r डॉट ये दोनों के टर्म जो कॉमन होगा इस दोनों को एक साथ लिखेंगे. बाकी टर्म को सॉल्व करने के बाद इस तरह से लिखेंगे और VR मेरा अलग से रहेगा जो इक्वेशन नंबर 6 को कहेगा. So as we see that the three coordinate r x y z are cyclic, hence corresponding linear momentum is this mass into velocity, where velocity, that is r dot, is the velocity of center of mass, is constant. This means that center of mass is either rest or moving with constant velocity. Obviously, the Lagrangian equation of motion for three generalized coordinate is r, but will not contain the terms in the r. मतलब इसके टर्म में तो r का टर्म नहीं है. Hence to discuss the motion of the system, we can drop इस टर्म को. हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको m1 m2 का डिस्कस करना है, इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. सो हम लोग इसको ड्रॉप कर दिए. सो मेरा इक्वेशन आया कुछ ऐसा, जिसमें से इस क्वांटिटी की जगह पे m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
इसके जगह पे हम लोग म्यू पुट कर दिए. दिस म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. इस तरह देख रहे हैं कि एक एक पार्टिकल है म्यू, जिसका मास है म्यू, और उसका पोजीशन वेक्टर है आर डॉट. सो ये दो बॉडी प्रॉब्लम से वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया. सो द फॉर्म ऑफ द Lagrange represented by equation 7 is exactly the same as that of a particle, a single particle with mass mu moving with a vector distance r from a center O. This center exists a central force on the particle and is taken as the origin of the coordinate system and appears to be fixed. Thus, the two-body central force problem has been reduced to the equivalent one-body system. So examples are planet sun system, hydrogen atom, positron, any diatomic molecule like H2, HCl, etc.